নিজকে হিন্দু ভক্ত বুলি উফাইডং মৰা বিজেপিৰ অদ্ভুত কাণ্ড। মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণৰ কাহিনী আৰু ইয়াৰ চৰিত্ৰবোৰ পৌৰাণিক তথা কাল্পনিক আখ্যা দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। শাস্ত্ৰ অধ্যয়নেৰে নহয়, গেম খেলিহে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কথা নৱপ্ৰজন্মই জানিব পাৰিব বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভগৱান ৰাম, হনুমান, ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰি এই আখ্যানসমূহ বিশ্বব্যাপী গেমিং উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিজে কৰিলে ভাল, আনে কৰিলে কাল, এয়াই যেন বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শ। বিজেপিয়ে প্ৰায় হিন্দু আৱেগক ৰক্ষা কৰা বুলি দাবী কৰে যদিও একে সময়তে সুবিধা হ'লে হিন্দু দেৱতা আৰু পৰম্পৰাক অসন্মান কৰাৰ প্ৰমাণো নথকা নহয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শেহতীয়া মন্তব্য, য'ত তেওঁ গল্প, কথা আৰু পৌৰাণিক কাহিনীৰ দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ভগৱান ৰাম, হনুমান, ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই আখ্যানসমূহ বিশ্বব্যাপী গেমিং উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। এই পবিত্ৰ ব্যক্তিত্ব আৰু মহাকাব্যসমূহক পৌৰাণিক কাহিনী বুলি ক'লে অন্তৰ্নিহিতভাৱে ইয়াক কাল্পনিক বুলি কোৱা হয়, যিয়ে হিন্দু ধৰ্মীয় আৱেগক আঘাত কৰিব পাৰে। कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। और आजकल भी मैं देख रहा हूं हमारे देश के कई स्टार्टअप हैं जो गेमिंग की दुनिया में बहुत बढ़िया भारत की बातें कह रहे हैं और बच्चों को भी खेलते खेलते भारत को समझना सरल हो जाता है। এই দৃশ্য চাওক, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চিলা উৰুৱাইছে, হনুমানক চিলা বনাই আকাশত উৰুৱাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই কাৰ্য কেনেবাকৈ যদিহে ৰাহুল গান্ধী নাইবা কোনো বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাই কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো সাধু সন্তসকলে কিমান যে কি নকলে হয় সেয়া হয়তো আপোনালোকে ভালদৰেই জানে। একে সময়তে দুখন চিলা উৰিছে আকাশত, এখন ভগৱান হনুমানৰ আৰু আনখন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মুঠতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে তেওঁ আৰু হনুমানৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। অৱশ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এইবোৰ কাণ্ডক লৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে। নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধৰ্মবিৰোধী চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি আখ্যা দিয়ে सुप्रिया श्रीनाथे। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। मोदी जी, ये आपके लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन का मूल्य है, हमारी नैतिकता की धुरी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए पूजनीय है। आप किस तरह से लोक आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं, ये आपका पुराना रिकॉर्ड है। आप ही तो थे जिन्होंने प्रभु राम को अपने से कद में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के एक फोटो जारी करी थी और उनको मंदिर में प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। वो आप ही तो हैं जिन्होंने काशी में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े, मूर्तियां ध्वस्त की, अब मणिकर्णिका घाट पर वो काम किया जा रहा है। आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनकर जितना अपमान हिंदू धर्म का करते हैं शायद ही कोई करता हो। और कितनी धर्म विरोधी सोच है आपकी, ये बार बार आपके आचरण में पता चलता है। हमारे ग्रंथों को किससे कहानियां बता देना, हनुमान जी को की पतंग उड़ा देना, मतलब अजीब तमाशे करते हैं आप। ये सब देखकर शायद आपके चरण चुंबक और भक्त जरूर चुप हो जाए, लेकिन हिंदू समझता है कि अगर वो खतरे में है तो आपकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, आपके भाई को भाई के लड़ाने की वजह से और आपकी धर्म विरोधी सोच की वजह से है। মুঠতে বিজেপিয়ে হিন্দু আৱেগক ৰক্ষা কৰা বুলি দাবী কৰে যদিও একে সময়তে সুবিধা হ'লেই হিন্দু দেৱতা আৰু পৰম্পৰাক অসন্মান কৰা এনেবোৰ কাণ্ডই এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।